Hello everyone. So welcome to Learnwizz. So this side Rahul. So again coming with a new video that is a continue of the previous video. Okay. So ये जो video है ये हमारा last exercise है that is 3.3 और pair of linear equation two variable NCERT. ओके जो कि 2025 टू 26 स्टूडेंट के लिए क्लास 10th ऑनगोइंग बोर्ड के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं सो मेक श्योर यू विल स्टे ट्यून फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द वीडियो so you can learn every tips and tricks how you can solve the question. And meantime you can follow our telegram channel so by scanning the QR code. Okay, so you will get a regular updates of our video. Plus if you want any type of practice paper, any type of book PDF or any type of solution, you can just request us so our team will help you. Okay, and also you can follow our WhatsApp QR code so you will get a regular updates of our videos when our video is going on. And you can see the here lot of our social media handles, so please follow and subscribe. Okay, so we will get support from you. Okay, and most important, subscribe our YouTube channel and share with your classmates, family, friends who are preparing for or who really want to understand the concept very easy way, so they can subscribe our Learnwizz channel. So in this one you will get every type of videos from class 3 to class 12. Okay, all these subject we are trying to bring you. Okay, so soon you will get a other subject video also, so make sure you will subscribe our Learnwizz channel. Okay, so let me start by this notes our last exercise video that is 3.3. okay, so please stay tuned from the starting to end of the video. And if you have any suggestion, anything you want to say, you can put a comment section in this video. Okay, so we can help you. Okay, and make sure you have already watched our first two exercise video and what is a linear equation, what is a pair of linear equation, the detailed video already we have our channel. So please reach out that video also and clear your concepts and doubts. Okay, so let me start our video. So let me start the exercise 3.3. Here it is saying solve the following pair of linear equation by using the elimination method and the substitution method. Okay, so we have to use both the method to solve this equation. Okay, and how we can solve, let's start the question. So first we will say, okay, what is our first equation? We will say x plus y is equal to 5. Our first equation we will take. Okay, and second equation you have given 2x minus 3y is equal to 4. Okay, so here you can say what we will do, this is your equation 2. Okay, so here we will say multiply equation 1 with 2. Okay, we will multiply the equation 1 with the 2. So how much you will get? Both the side we will multiply, left side also as well as right side also. So you will multiply both the sides. So 2 times x plus y is equal to 5 times 2. So you will get what? 2x plus y is equal to 10. Okay, now this one you can say the equation 3. Now we will say here, after all this thing, here 2y will come. Okay, we can do subtract equation 3 from equation 2. Okay, so equation 3 we have to subtract from equation 2. So first we will write the equation 2. So what you have equation 2? 2x minus 3y is equal to 4. And what you have equation 3 that you have to subtract? So equation 3 you have 2x plus 2y is equal to 10. Now you already know when we have subtract two polynomial equations, so we have to change the second equation sign. So this is minus, minus, minus. Okay, now after that we can subtract them. So how much you will get? So plus 2x minus 2x becomes 0. Now minus 3y and minus 2y. So you will get how much? 5y minus 5y is equal to 4 minus 6. You will 4 minus 10, so you will get minus 6. So y is equal to minus 5, y is equal to minus 6. Okay,
Now after that you can say here this one. So y is equal to, so minus 5 will transpose to the right side. So you can say minus 6 over minus 5. So you will get y is equal to how much? 6 over 5. Minus minus get cancelled. Okay, so y value you will get. Now this y value you will substitute into any equation. Either you can substitute in first equation or second equation. So we will say substitute value of y in equation 1. We will say in equation 1. So what you have equation 1, x plus y is equal to 5. So here you can substitute the y value. So what is the y value you got? 6 over 5. So you can say x plus 6 over 5 is equal to what? 5. Now after that you can transpose these things to another side. So if you transpose, so it will become what? Negative. So you can say x is equal to 5 minus 6 over 5. Okay, so you will get how much? So x is equal to, you can take the LCM 5. So 25 minus 6, you will get how much? 19 over 5. Okay, x value you have got 19 over 5. So you can say y value you will get how much? 6 over 5, and x value you will get 19 over 5. So hope you understand how we have used the elimination method and how we can use the substitution method to solve the equation. तो clear है? मतलब आपको दोनों method का use करना है और इसको solve करना है. Okay? Now let me solve with the second equation. Let me solve the second question. So what is our second question is given? So we will say second question it is given 3x plus 4y is equal to 10. Okay. And second equation you have given again 2x minus 2y is equal to 2. Okay. So again this question we have to also solve with the substitution and elimination method with the help of them. Okay. So we will say, okay, so first equation we can say the 3x plus 4y is equal to 10. This we will take a equation 1. Okay. Then you can say 2x minus 2y is equal to 2. So this one you can say equation 2. Okay. So now here we have taken the both the equation 1 and 2. So first one we will say we want to here eliminate which value we want to eliminate, that we have to decide. Okay, we will say we have to eliminate here y value. Okay, so if we have to eliminate y value, so what we will do, equation 2, you can say in equation 1 you have y coefficient is 4, equation 1 y coefficient is 4, and equation 2 y coefficient is 2. So to make a coefficient equal, so whole equation 2 is multiplied with the 2. So we can say equation 2 multiply with 2. ओके जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जिससे हमारा y का कोफिशिएंट सेम आ जाए. तो वी विल से ओके सो here if you multiply, so you will get what here? So 2x minus 2y is equal to 2. So both sides you will multiply with the 2. Okay. So you will get what equation? So final equation you will get 4x minus 4y is equal to 4. Okay. So this is, you can consider as equation 3. Okay. You got the equation 3. Now we will say, we will add equation 1 and equation 2. So we can say add equation 1 and 3. Okay, 1 and 3. Okay, so you can, what you have equation 1, 3x plus 4y is equal to 10. Okay, आपका third equation क्या है? 4x minus 4y is equal to 4. So if you now add both the equation, so how much you will get?
So 3x plus 4x. So you will get what? 7x. And 4y minus 4y. It will become 0. And same with 10 plus 4. So you will get 14. So you can say here, so 7x is equal to how much? 14. So x, now 7 will transpose, so 14 over 2. So you will 14 over 7. So 14 over 7. So you will get 2. Okay, so x value you will get 2. Now, after all this thing, you can substitute the x value in any equation. So we will say, okay, let me substitute in the equation 1. So substitute the value of x in equation 1. So what do you have equation 1? So 3x plus 4y is equal to 10. This is your equation 1. Now you can substitute the value of x. So 3 times 2 plus 4y is equal to 10. So you can say 6 plus 4y is equal to 10. So now you can transpose the 6 from the left side to right side. So you can say, so 4y is equal to how much? 10 minus 6. So y, now 4y is equal to how much? You can say this one is equal to 4. So now y equal to how much? You can say 4 over 4 is equal to 1. So now you can see you have got the x value is equal to how much? 2. And y value you will get how much? 1. So now hope you have understand how we have used the elimination and substitution method to solve this equation. तो आपको clear हो गया होगा. कोई doubt हो आप comment section में बता सकते हो. So we can again help you. Okay. Now एंड इसके बारे में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है तो आप लिंक में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो या यहाँ पे बेल आइकन आप देख सकते हो सजेशन वीडियो में आपको वहां पे क्लास 10 के सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें इसमें हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है उसमें आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है तो दैट यू कैन ऑल्सो चेक ओके नाउ कमिंग विद द थर्ड क्वेश्चन okay so now third question it is saying so 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 that is your first equation now 9x equal to 2y plus 7 that is your second equation so same way we will write both the equation here so we can say 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 okay so what we will say this is equation 1 okay now same way we can say 9x equal to 2y plus 7 now you can say सेकेंड इक्वेशन थोड़ा उधर उधर है तो सबसे पहले हम उसको अरेंज कर लेते हैं सो यू कैन ट्रांसपोज 2y फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड टू लेफ्ट साइड एंड सेम विथ प्लस 7 also transpose from right side to left side so we can say this one you got how much 9x minus 2y minus 7 is equal to 0 so now you can take this is equation 2 ठीक है तो अभी देखो हमारा दोनों इक्वेशन आ गया 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है हम कौन से वैल्यू को वेरिएबल्स को हमें इलिमिनेट करना है ठीक है तो हियर यू कैन से इन द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव x एंड y वैल्यू variables okay so here we want to eliminate okay so how we can eliminate so simple we can say in this one we want to eliminate x value so what we will say multiply अब देखो यहां पे आपका फर्स्ट इक्वेशन में y की कोफिशिएंट क्या दी हुई है 3 दी हुई है और सेकंड में क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ है तो हमें दोनों की कोफिशिएंट को इक्वल लाना है तो हम क्या करेंगे सो वी विल से multiply equation 1 with 3 ठीक है तो इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 so you will get how much 9x minus 15y minus 12 is equal to 0 this one you can take a equation 3 ठीक है अब सिंपल वे में हम बोलेंगे subtract equation 2
फ्रॉम 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। आप चाहे तो 3 को भी 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, नॉट वरी अबाउट दैट। सो 9x 15y minus 12 is equal to 0. Now write the equation 2. So 9x minus 2y minus 7 is equal to 0. ठीक है, अब क्या करना है, हमें सेकेंड ऑपरेशन का साइन चेंज करना है, क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड एक्सप्रेशन का हमें साइन चेंज करना है। तो वी विल से दिस वन इज माइनस, बिकॉज क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 9x सेकेंड एक्सप्रेशन का बिकम माइनस 9x, 2 minus 2y become plus, okay, and minus 7 so become plus 7. Okay, now we will subtract them. So if you subtract them, so how much you will get? 9x and minus 9x become 0. Now minus 15y and plus 2y, so how much you will get? This one, so minus 13y. Now same way, minus 12 and plus 7, so you will get how much here? You will get here you will get minus 5 is equal to 0. Hope you getting? Now after that we will say, hey, minus 13y minus 5 is equal to 0. So now you can take a minus 5 to other side, so you can say minus 13y is equal to 5. So because minus 5 है तो अदर साइड गया प्लस हो गया। सो नाउ y इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से, माइनस 13 को हम लोग अदर साइड ट्रांसपोज कर देंगे, सो 5 ओवर माइनस 13, सो यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 13। तो ये आपका y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, now let we will substitute the y value in any equation. So we will say, okay, let we take a here equation 2, इक्वेशन 2 आप ले लो या कोई भी ले लो। तो लेट वी विल से substitute the value of y in equation 1। ठीक है, इजी वे में हम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या निकला है, माइनस 5 ओवर 13। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. सिंपल है। तो अब इसमें आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 3x minus 5 times minus 5 over 13। ठीक है, सो इज इक्वल टू, अब 4 को आप अदर साइड लेके चले जाओ, सो इट विल बी बिकम प्लस 4। सो नाउ हाउ मच यू विल गेट, 3x इज इक्वल टू प्लस 25 over 13 is equal to 4. Okay, now you can transpose this whole term to other side, so you can say 3x is equal to 4 minus 25 over 13। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यू कैन से 3x is equal to, एलसीएम आप ले लो, 13 and 13 यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 52 minus 25। ठीक है, so this one you will get how much, 27 over 13। ठीक है, now after that we will take a 3, so we will say, hey, our equation is 3x is equal to 27 over 13। अब 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे, 3 आपका क्या लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसपोज होने। सो x इज इक्वल टू 27 over 3 times 13. So you can say here this 3 and this 9 you will get. So you will say x is equal to how much you will get? X is equal to 9 over 13. So this is your x value. Hope you have got it. हमने x का वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करके निकाला, इजी है, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। मैंने इसलिए कोई भी यहाँ पे ज्यादा अननेसेसरी ट्रिक्स यूज नहीं किया, हर एक स्टेप को मैंने स्पेसिफाई किया जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि बाद में कि सर आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कैसे ले लिया, या आपने सॉल्व किया यहाँ पे 52 कैसे, 52 आपको कैसे आया, सिंपल आप देख रहे हो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 13 को, 52 आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका 1 है। ठीक है, तो हर एक स्टेप को मैंने स्पेसिफाई किया जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं इस स्टेप को रिमूव रख सकता हूं, तो आप रिमूव रख सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन।
ठीक है. So fourth question, it is also given in fraction form. So first here it is saying x over 2 plus 2y over 3 is equal to minus 1. And second one you have x minus y over 3 is equal to 3. ठीक है. तो हम इस इक्वेशन को भी इजी वे में सॉल्व करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लेना है, एकदम आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. लेट्स ट्राई विद दिस वन. So the fourth question equation is x over 2 plus 2y over 3 is equal to minus 1. And second equation you have x minus y over 3 is equal to 3. Okay. So आप एक बार equation check कर लो. So whether I have written the correct equation? Yeah, every equation is correct. ठीक है. तो अब हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे. तो हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x over 2 plus 2y over 3 is equal to minus 1. ठीक है. तो दोनों साइड हमारा फ्रैक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लो. 2 और 3 एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम. नाउ यू कैन से 6 divided by 2, so you will get what, 3, and this 3 will multiply with the numerator, so you will get 3x. Same way 6 को आप 3 से divide कर दो, so you will get 2, and now this 2 will multiply with 2y, so you will get 4y is equal to minus 1. ठीक है. अब देखो ये जो आपका 6 है, it will transpose to other side. Okay, so you will get how much, so you will get 3x plus 4y is equal to minus 6. Okay, now this one you can take a equation 1. ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन 1 आ गया. नाउ सेम वे यू कैन टेक अ सेकेंड वन. सो सेकेंड वन आपका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस y ओवर 3 इज इक्वल टू 3. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे. तो you can see there is nothing is given denominator, so you can take 1. So LCM you will get here how much, 3. So 3 divided by 1, so you will get 3. So 3x minus y is equal to 3. So you can say 3x minus y is equal to 9. So this is your equation 2. Now अब हमें डिसाइड करना है which variable we want to eliminate. So now if we want to eliminate a variable x. क्यों? Why? Because you can say in both expression x coefficient are same. So directly we can write here, okay, subtract equation 2 from 1. Okay, 2 from 1. Okay, so we will say here equation 1 is equal to 3x plus 4y is equal to minus 6. Lot of student का एक डाउट रहता है, सर अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमारा वैल्यू डिफरेंट आएगा? नहीं, वैल्यू सेम आएगा. ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है कि सर ने 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें भी 2 से 1 को करना है. ठीक है, अगर आपको मन है तो आप 1 को 2 से भी कर सकते हो. ठीक है. now we can say this is your equation 1. Now what you have equation 2? So 3x minus y is equal to 9. Okay, now we can change the sign. So we can say this is, because it is subtracting, so minus plus minus. Okay, now we will subtract easy way. So we will say 3x minus 3x becomes 0 and plus 4y and plus y. So you will get how much? Plus 5y. Now minus 6 and minus 9. You will get how much? Minus 15. So y is equal to, you can say, now we can say here 5y is equal to minus 15. So 5y is equal to minus 15. So we can say y is equal to 5 will multiplying. So it will transpose. So what it will do? It will divide. So minus 15 over 5, you will get how much? Minus 3. अब आपका y का वैल्यू निकल गया. आप y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. So let me will say substitute in the equation 2. Okay, so substitute
substitute the value of y in equation 2. ठीक है? So what is you have equation 2? This is your equation 2. So you can say 3x minus y is equal to 9. Okay. So you can say 3x minus 3 is equal to 9. So you will get 3x plus 3 is equal to 9. Okay. Now here is very clear way. So what we will do? We will transpose this 3 from one side to another side. So you will get how much? 3x. You will get 9 minus 3. So you will get 3x is equal to 6. Now, after that, you can transpose the coefficient of x. So x is equal to 6 over 3. You will get how much? 2. So you can say y value, you will get how much? Minus 3. And x value, you will get how much? 2. Hope you have cleared this one. Easy way में हमने कर लिया, ठीक है? तो ऐसे करके आप by using the substitution and elimination आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है? So make sure स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करो. Okay, now coming with the next question. Now next question it is saying from the pair of linear equation we have in the following problem find out their solution by elimination method. Okay, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्पेशली हमें elimination method यूज करना है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि हाँ यू हैव टू यूज ओनली एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उस क्वेश्चन को हमको उसी मेथड से करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. ठीक है? Now, it become 1 over 2 if we will only add 1 to the denominator. What is a fraction? So, according to the question, यहाँ पे बात हो रहा है क्योंकि ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में. तो सिंपल यहाँ पे बोल रहा है बात फ्रैक्शन की बात हो रहा है. तो हम बोलेंगे let the fraction be a over b. a by b हमने फ्रैक्शन ले लिया, न्यूमरेटर a हो गया, डिनोमिनेटर b हो गया. सिंपल वे में मैंने डायरेक्ट ले लिया. लेट बी फ्रैक्शन a over b. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? 1 is added to the numerator. So we will say 1 is added to the numerator. So a plus 1 and subtract 1 from the denominator. So we will say b minus 1 and a fraction reduce to the 1. A fraction reduced to the 1. So we will say it is equal to 1. ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, you got the expression, we will do the cross multiplication. So a plus 1 is equal to 1 time b minus 1. Okay, so you will get how much? A plus 1 is equal to b minus 1. Now you can bring this b in this side. So a minus b and 1 you can bring that side. So 1 and this one become minus 1 and minus 1. So you will get final expression a minus b is equal to minus 2. So this is your equation 1. ठीक है, ये आपका equation 1 आ गया. अब दूसरा क्या बोल रहा है आपका? It becomes 1 over 2. हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 over 2. ठीक है, तो हम दूसरे एक्सप्रेशन को लेते हैं. तो फ्रैक्शन है हमारा a over b. ठीक है. Now it is saying if we will add 1 to the denominator. So 1 we will add to the denominator, the fraction become 1 over 2. ठीक है. तो same way we will do the cross multiplication. So 2a is equal to b plus 1. So now you can bring the b this side. So 2a minus b is equal to 1. ठीक है. This is your equation 2. Okay. Now it is saying you have to use the elimination method. ठीक है, हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है सिंपल वे में, हम ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे. सो सिंपल वी विल से हे सब्ट्रैक्ट. तो हम यहाँ पे आप देखोगे इफ यू सी वी विल गो विद दिस b कोफिशिएंट इन बोथ आर सेम. ओके, सो वी विल से सिंपल वे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2. Okay, so
equation 2 you have 2a minus b is equal to 1. Okay, now equation 1 you will a minus b is equal to minus 2. Now you can change the sign. So you can say this is plus, this is minus, you will get here minus a, and this one you got plus, this one you also got plus. Okay, now after that what we have to do, we have to subtract them. So 2a minus a, so you will get a, and minus b plus b becomes 0, and 1 plus 1 and plus 2, so you will get 3. So a is equal to, you will get how much, 3. You have got it now. So a का अब वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. तो लेट वी विल से put the value, put value of a in equation 1. Okay, so equation 1 you have a minus b is equal to minus 2. So a value you got how much, 3. 3 minus b is equal to minus 2. So minus b you will get how much, minus 2 minus 3. So b is equal to, minus b is equal to minus 5, and b is equal to how much, 5. ठीक है, तो ये आपका आ गया. So fraction is equal to, fraction आपका क्या हो गया, 3/5. ठीक है, ये आपकी आंसर हो गया. ठीक है, क्लियर है ना. इजी वे में हमने किया, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं, ये आसानी से हमने कर लिया. सो दैट वे वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एज बेस्ड क्वेश्चन. तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था. सो मेक जो आपको ट्रिक्स मैंने बताया था, थोड़ी सी इंग्लिश का वर्ड क्या बताया था, टेंस. सो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. ठीक है, तो एज बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा हमें प्रेजेंट का करना है. प्रेजेंट से जब आप पास्ट जाओगे तो आपकी एज क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, और जब प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाओगी आपकी एज ऐड होगी. बस इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be thrice as old as Sonu. How old are Nuri and सोनू. ओके, तो यहाँ पे दो लोगों की एज बात हो रही है, किसकी किसकी, नूरी एंड सोनू की. ठीक है, तो इसके एज का हमें सॉल्यूशन करना है, वो भी किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से. तो ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही इजी वे में. देखो एज बेस्ड क्वेश्चन हर एक साल एक आने का चांस होता है, तो इसमें जैसे मैंने बताया उस चीज का आप इस्तेमाल करो, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, लेट वी विल टेक अ प्रेजेंट एज ऑफ बोथ होम, नूरी एंड सोनी. सो वी विल से हे लेट नूरी प्रेजेंट एज, नूरी प्रेजेंट एज. ठीक है, लेट्स नूरी प्रेजेंट एज. नूरी की प्रेजेंट एज हमने ले लिया x. ठीक है, दूसरा है सोनू. सो लेट्स सोनू प्रेजेंट एज. ठीक है, सोनू का प्रेजेंट एज क्या हो गया, सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y. ठीक है, तो दोनों का एज हमने ले लिया x एंड y. ठीक है, अब देखो बोल रहा है 5 years ago, मतलब 5 years ago मतलब 5 साल पहले, मतलब पास्ट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें, तो फर्स्ट बोल रहा है 5 years ago. सो 5 years ago, 5 years ago. तो 5 years ago की बात करें, सो इट विल टेकिंग अ प्रेजेंट एज टू पास्ट एज. ठीक है, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी एज विल बी x minus 5. ठीक है, नूरी एज विल बी x minus 5 एंड सोनू एज विल बी हाउ मच, y minus 5. ठीक है, दोनों का 5 साल पहले एज कितना हो गया, नूरी का प्रेजेंट एज x है और सोनू का एज y है. तो 5 साल पहले दोनों का एज 5-5 साल घट जाएगा. ठीक है, तो नूरी का एज हो गया x minus 5 और सोनू का एज हो गया y minus 5. अब बोल रहा है दैट टाइम नूरी वॉज thrice as old as सोनू. सो मतलब जो नूरी की जो एज है दैट इज अ थ्राइस. सो वी विल से
is equal to Nuri age thrice had old as Sonu. So 3 times Sonu age. So you will get the equation. You can solve the equation now. So x minus 5 is equal to 3y minus 15. Now you can bring the y in that side. So you get x minus 3y, and minus 5 you can take the other side, right side. So minus 15 plus 5. So you will get x minus 3y is equal to minus 10. So this is your first equation. ये आपका किसके बेसिस पे निकला? पास्ट के बेसिस पे निकला. देखो कितना आसानी से हमने कर लिया. ठीक है. अब बात करता है नेक्स्ट 10 ईयर लेटर, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद. ठीक है. तो क्वेश्चन हम लोग फिर हमने लिखा 10 ईयर लेटर. ओके, हम वर्ड में लिख देते हैं, सो आप कंफ्यूज मत हो. सो 10 ईयर लेटर. ठीक है. ये यहाँ पे ये भी लिख देते हैं पास्ट एज, तो आपको पास्ट एज, कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है. पास्ट एज. ठीक है. दिस इज अ पास्ट एज. और 10 ईयर लेटर बोल रहा है, सो दिस विल बी, वी विल टॉक फ्यूचर. ओके, सो दिस इज योर फ्यूचर एज. ठीक है. तो मैंने जैसे बताया प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है तो एज हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा ऐड हो जाएगा. तो अभी नूरी की एज क्या है, x है. तो आफ्टर 10 ईयर नूरी एज विल बी व्हाट, x प्लस 10. सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू की भी एज y प्लस 10 हो जाएगी. तो सोनू एज इज ऑल्सो व्हाट, y प्लस 10. ठीक है. तो दोनों की एज 10 इंक्रीज हुई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 ईयर लेटर. ठीक है. अब उसके बाद आप रिलेशन देखो, तो रिलेशन क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस हैज ओल्ड एज सोनू. सो जितनी भी नूरी की एज है दैट विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू. सो वी विल से x plus 10 is equal to 2 times y plus 10. मतलब जितनी नूरी की एज है दैट इज अ ट्वाइस ऑफ सोनू एज. ठीक है. तो अब आप इसको भी सॉल्व कर लो. सो यू कैन से x plus 10 is equal to, you will get 2y plus 20. Okay. Now you can bring all the variable at one side. So x minus 2y, you will get 20 minus 10. So second equation आपका मिल गया x minus 2y is equal to 10. ठीक है. So this is your second equation. ठीक है. अब देखो दोनों इक्वेशन मिल गए. ठीक है. आपके फर्स्ट इक्वेशन x minus 3y is equal to minus 10. सेकेंड इक्वेशन x minus 2y is equal to 10. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड यूज करना है. तो फिर अगेन आपका आता है कि लेट वी विल से यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है, दोनों में सेम है. तो डायरेक्टली हम ज्यादा कुछ यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ओके सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. आप चाहे तो इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो. ठीक है. इक्वेशन 1. ठीक है. तो व्हाट यू हैव इक्वेशन 1, सो x minus 3y is equal to minus 10. This one you have x minus 2y is equal to 10. ठीक है. Now let me change the sign. So this one is become plus, so it will be minus. This is plus, so it will become minus. So it is also minus. ठीक है. Now you can subtract them. So plus x minus x become 0. Minus 3y plus 2y. So you will get minus y. Now minus 10 minus 10. So you will get minus 20. So now you can say y equal to minus y is equal to minus 20. So both side minus minus get cancelled. So y is equal to 20. So this is, you got y value. So y is what you have taken, the age of Sonu. सोनू की एज कितनी मिल गई, 20. प्रेजेंट एज सोनू की एज हो गई 20 इयर्स. ठीक है. अब हमें किसका एज निकालना है, नूरी का. तो you can take any expression. Let me will take a first equation. So first equation आपका क्या है, x minus 3y is equal to minus 10. So you can say x minus 3 times 20. You will get minus 10. So x is equal to, you can say minus 10 and plus 60. So x is equal to, you will get 50. So which means Nuri age is equal to how much, 50 years. ओके. तो आप देखिए
कितना इजी वे में हमने इसको क्लियर कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो घबराने का नहीं है, आसानी से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर खेलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन जब प्रेजेंट एज लेना है, प्रेजेंट से हम पास्ट में जाएंगे तो हमें क्या करना है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर फ्यूचर में जाते हैं तो ऐड करना है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, होप यू हैव गॉट इट क्लियर। नाउ कमिंग विद द दिस वन। तो देखो, क्वेश्चन आने का चांस, आपको फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस रहता है और एज बेस्ड, और एक ये नंबर सिस्टम भी आने का चांस होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, तो लेट वी विल सॉल्व दिस वन। सो वी विल से द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर, okay, is 9, okay, and 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Okay, so हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान है, सिंपल वे में। So now we are talking about question number 3। तो ये 2 digits की नंबर की बात हो रहा है। तो 2 digit में अब 2 digits होते हैं, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो हम बोलेंगे लेट units place digit is equal to, you can say, a। ठीक है, and tens place digit is equal to b। ठीक है, ठीक है। नाउ तो अभी आपका नंबर जो है, नंबर विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो अब देखो, कोई भी नंबर जैसे आप लेते हो 56 आपका नंबर है, तो इसको आप एक्सपैंड करते हो तो क्या लिखते हो, 50 + 6, क्योंकि 5 इज एट टेंस प्लेस, तो आप 10 से मल्टीप्लाई, 6 इज एट वंस प्लेस, तो 6। तो सेम वे आपका जो नंबर है वो क्या है, ए बी है। तो अब आप इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी, बी ए है आपका नंबर, क्या है, बी ए है। ठीक है, बी ए। ओके, तो अब इसको आप एक्सपैंड फॉर्म में लिख सकते हो, सो 10b प्लस ए। ठीक है, अब बोल रहा है नंबर विल गेट रिवर्स, सो रिवर्सिंग द नंबर, ओके। सो नंबर को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो जो आपका यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे चला गया, और जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे हो गया, तो ए बी हो गया। तो इसको भी आप एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हो, सो 10a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है 9 times this number is twice the number obtained by reversing। मतलब जो नंबर हमारा obtain हो रहा है, that is a 9 times the original number। okay, so we will say, okay, so according to information we will क्या बोल रहा है, दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है, a प्लस b का सम कितना आ रहा है, 9। तो ये आपका एक 9 आ रहा है, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब बोल रहा है दोनों को रिवर्स करते हैं, जो हमारा पहले का नंबर है 9 टाइम्स ऑफ दैट वन, सो 10b प्लस ए। ओके, होल इज 9 टाइम्स इज ट्वाइस ऑफ आफ्टर रिवर्सिंग, सो 10a प्लस b। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो यू विल गेट 90b प्लस 9a इज इक्वल टू, you will get 20a plus 2b। Now you can bring all the variable at one side, so 90b minus 2b plus 9a minus 20a, you will get 0, so you will get 88b, and this one you got minus 11a is equal to 0। अभी क्या है, इस दोनों में आप देखोगे हमारा इक्वल आ रहा है। अभी आप देखोगे दोनों में हमारा 11 इक्वल आ रहा है, सो यू कैन टेक अ 11 कॉमन, सो यू विल गेट 8b minus a is equal to 0। so now you can say 8b minus a is equal to 0, because 11 हमारा transpose हुआ other side, so it will divide with the 0, you will get 0। so now this is your equation 2। अब हम क्या करते हैं सिंपल वे में यहाँ पे, तो नाउ वी कैन से add equation 2 and 1।
Okay, clear? Equation 2 and equation 1. Okay, तो हम इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, and now we will see how we can add. So we will first write this equation in proper order. So 8b minus a is equal to 0. Now second equation you can write in the same order. So you can say second equation you have how much? B plus a is equal to 9. Okay, so now you can add them both. So you can say 8b plus b, 9b, and minus a plus a become 0 is equal to 9. So b is equal to how much you will get? 9b is equal to 9. So we can transpose the b, 9 coefficient of b. So b is equal to 9 over 9 is equal to 1. ठीक है, अभी आपका b का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया. अब b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर. लेट मी सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन. सो a plus b is equal to 9. Now you can say a plus 1 is equal to 9. So a is equal to how much you will get? 9 minus 1. So a is equal to how much you got? 8. So you can get here a is equal to 8 and b is equal to 1. So what you will get the number? So number आपका क्या हो जाएगा? So number will be here, you can say a is at unit place. So 18, 8 हो गया, and b is at tens place. So 1. So number will be 18. Okay, hope you got it. So number will be 18. Okay, clear? So this is your answer. Now coming with the next question. So next question, it is also interesting question. तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं. तो क्वेश्चन बोला है मीना went to bank, okay, to the bank to withdraw 2000 rupees. Okay, she asked the cashier to give her 50 rupees note, 100 rupees notes. नोट्स वाली मतलब इस मीना को केवल 50 रुपीज नोट्स और 100 रुपीज नोट्स चाहिए. सी गॉट टोटल 25 नोट्स ऑल. So find how many notes are 50 rupees and how many notes are 100 rupees. Okay, so बहुत ही सिंपल है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बट इजी है, आसानी से हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे बात हो रहा है ट्रांजेक्शन की. तो ट्रांजेक्शन कितने रुपीस के नोट? 50 रुपीस एंड 100 रुपीस नोट. सो लेट वी विल से इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट वी विल से ओके, सो लेट द नंबर ऑफ let the number of 50 rupees note, 50 rupees notes, 50 rupee, let the number of 50 rupee notes be a. ठीक है, a. ठीक है. Now let the number of 100 rupee notes, you can say 100 rupee notes को हम लोग b ले लेते हैं. ठीक है, नोट्स b. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल 100 और 50 का कितना नोट्स मिला है? पहला इक्वेशन तो आपको यहीं पे मिल गया 25. सो वी विल से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द नोट्स विल बी हाउ मच? a प्लस b इज इक्वल टू हाउ मच? 25. ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि जो टोटल मनी है तो हमारा वो कितना आ रहा है? 2000. सो वी विल से ओके, सो 50 रुपीज के नोट्स हमारे पास कितने? a है, तो विच मीन्स 50 टाइम्स a प्लस, और 100 रुपीज के नोट्स कितने? b है, तो 100 टाइम्स b इज इक्वल टू 2000 बिकॉज दैट इज द सम ऑफ मनी. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ थोड़ा से हम इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं. तो यू कैन सी बोथ द साइड 50 is common. So we can take a 50 common from this two. So we will say 50 common. So a plus 2b is equal to 2000. Okay, now this 50 will transpose to other side. So a plus 2b is equal to 2000 over 50. So you will get this one, a plus b, a plus 2b is equal to 40. So this is now you can take a equation 2. देखो
ये एक तरीका होता है, हम इक्वेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा बड़ा नहीं करें, जिससे क्या हो कि हमारा इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए, आसानी से हम उसको एलिमिनेशन में ला सके, क्योंकि हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इसलिए हमने इक्वेशन को थोड़ा सा उसके कॉमन वैल्यू पे हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, अब हमें बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सो अब आप दोनों इक्वेशन को देखोगे, दोनों इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, सेम है, ए की कोफिशिएंट। सो वी कैन से सिंपल वे, subtract subtract equation subtraction of equation 1 from 2, okay, from equation 2, okay. So what you have equation, equation 2, so a plus 2b is equal to 40. And what you have equation 1, so a plus b is equal to 25. Now we have to subtract, so change the sign, minus, 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 okay. So now after the subtraction, so plus a minus a becomes 0, 2a minus b, so you will get b, and 14 minus 25, so you got 15. So number of b notes, b आपने क्या लिया था 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज के नोट्स कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, अब हमें a वैल्यू निकालना है। नाउ substitute the value of b in equation 1, value of b in equation 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपका कितना हो गया, a plus b is equal to 25। So b is equal to how much you got, 15, a plus b 15 is equal to 25। So a is equal to how much you got, 25 minus 15, so you will get how much, 10। So now you can say, so आपका 50 रुपीज के कितने नोट्स हो गए, 10। So 50 रुपीज के तो 10 नोट्स हो गए। So you can say 50 times 10 plus 15 times 100. So you can see you are getting what, 2000 rupees। Okay, hope you getting 2000 rupees आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर a is equal to 10 and b is equal to 15। Hope you have clear this one। So इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बोला है a lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each days thereafter। मतलब अगर हमने कोई बुक लिया तो फर्स्ट 3 डेज की चार्ज फिक्स है, उसके बाद एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। सरिता paid 27 rupees for a book keep for the 7 days। ठीक है, and while Susie paid 21 rupees for a book keep for the 5 days। okay, so find the fixed charge and the charge for each days। okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि हमें फिक्स डे चार्ज निकालना है, दैट इज टेकिंग फॉर 3 डेज, एंड दूसरा हमें एडिशनल ईच डे की चार्ज क्या होती है वो निकालनी है। तो लेट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी विल से, यहाँ पे दो वेरिएबल हमें लेना है। सो वी विल से फर्स्ट हियर लेट फिक्स charge for 3 days, fixed charge for 3 days। okay, 3 days। okay, so we will say let fixed charge for 3 days is equal to a। okay, now additional days charge, so each day extra, each day's charge, we will say each day's extra charge is equal to b। ठीक है, ये हमने दो वैल्यू ले लिया, एक फर्स्ट 3 डेज का चार्ज ले लिया और एक 3 डेज के बाद जितने दिन आप रखते हो उसका एडिशनल चार्ज हमने ले लिया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो डायरेक्ट इक्वेशन दी है। सरिता ने जो बुक लिया फॉर 7 डेज के लिए लिया। ठीक है,
तो 7 minus 3, so 4 days. So first तो इसका additional charge हो गया सरिता का. So according Sarita, first we will take a Sarita. Okay. So Sarita ने कितने डेज के लिए बुक लिया? 7 डेज के लिए. तो 7 डेज के लिए लिया, तो 7 डेज में तो 3 डेज तो फिक्स चार्ज हो गया, तो रिमेनिंग कितना डेज बचा? 4 डेज. सो फिक्स चार्ज हो गया A और एडिशनल चार्ज हो गया 4 times B is equal to how much? 27. Okay, so this you can take equation 1. Now next one you have Susi. Okay, so Susi is taken for how many days? Susi is taken for 5 days. So Susi ने 3 days, तो 5 में से 3 कर दोगे तो 2. So A plus 2 times B is equal to 21. ठीक है. Now you got equation 2. अब हमें इसको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड. तो अब देखो सिंपल, A दोनों में सेम है, दोनों में A का कोफिशिएंट सेम है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? ओके, सब्ट्रैक्ट equation 2 from equation 1. ओके, ठीक है. तो equation 2 को हम लोग equation 1 से. So equation 1 you have A plus 4B is equal to 27. Okay, and equation 2 is equal to A plus 2B is equal to 21. Okay, now what we will say, sign will change. Okay, that is important. So minus plus become minus, and here plus become minus. Okay, now you can put a value. You can say A plus A become what? 0, and plus 4B minus 2B. You will get how much? 2B is equal to 27 minus 21. So you will get 6. Okay, so now we will say in this one, so 2B is equal to what? 6. Okay, so B is equal to how much? So coefficient of B will go that side, so 6 over 2. So you will get 3 rupees each day charge. मतलब each days की charge हो गई 3 rupees. अब हमें fixed charge निकालना है. So we will say, take the equation. So first second equation हम लेते हैं. A plus 2B is equal to 21. So A plus 2 times 3 is equal to 21. So A plus 6 is equal to 21. Okay, now 6 you will transpose other side. So you will get A is equal to 21 minus 6. So A is equal to 15. So you can say A is equal to fixed days charge 15 rupees. Hope you have clear this question. So by this note, all the question of this exercise has been completed. तो होप आपके सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्लियर हो गए. तो इसी के साथ हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीबीएसई क्लास 10th का एक एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया. अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या टेलीग्राम में आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो स्कैन कोड करके. क्यूआर कोड आपको दिख रहा है स्कैन करके, कि अब आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए या हम किस चैप्टर की वीडियो बनाएं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो को बनाते हैं. ठीक है, और इस चैप्टर को लेके अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका बाकी वीडियो भी मिल जाएगा. ठीक है, और इसी के साथ प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब आवर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो एंड शेयर दिस वीडियो. मतलब आप इस वीडियो को वॉच करो, अपनी फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर करो, जिससे उनकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ बेस्ट टीचर, बट हाँ, जैसा मैं पढ़ाता हूँ इट इज योर हेल्प यू to clear your concept. Okay, so please share this video with your maximum number of friends, maximum number of your school going students, so it will help them. Okay, so let's see on the next video. So meantime, learn more, achieve more with the Learnwizz. Okay, so thank you for watching the video. Please subscribe our channel.